एंड डाइट्स की अगर बात करें एथलीट्स के लिए हो सकता है, लेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है. डाइट फॉर एथलीट्स एंड डाइट फॉर कॉमन पीपल, ठीक है, जिनको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, लिटिल बिट थोड़ा सा मूवमेंट है उनका दिन में, एंड स्पेसिफिक टू एथलीट्स. सो व्हाट्स द डिफरेंस कि वो कई लोग क्या होता है ना, मेजरली कॉमन पीपल में स्टोन का प्रॉब्लम होगा तो वो प्रोटीन्स लेस लेते हैं. और इंडियन डाइट के हिसाब से अगर बात करें तो कार्ब्स मैक्सिमम डाइट में कार्ब्स होते हैं. आलू खा लो, रोटी खा लो, यही चलता है पूरे दिन. एंड एक एथलीट के लिए दोनों तरफ से बात करके मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट दे शुड हैव एंड व्हाट दे शुड नॉट हैव, बिकॉज बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं, लोग पिज्ज़ा खा के भी बॉडी बना रहे हैं, यू नो. I used to load up on 12 donuts 3 times a week to cross my weight plateau that I was stuck on. I was stuck on 87, 88 and I wanted to play at 92, 93. I was a bully on a court and a pest on defense. And I had a ratchet. I was shooting deep threes before Steph Curry was shooting deep threes. Steph Curry, are you listening? Are you listening, Steph Curry? Bench पे बिठाते थे उसके लिए. Okay, coming back to, you're discussing diets for two different set of people. One is the athlete set of group, and other are the common people who are working professionals and wants to stay fit. What is your recommendation and what to eat and what not to eat in the entire day? Let's talk about the common people first. I think मैं दोनों के लिए same ही कहूँगा. I'll recommend the same kind of process for both people. Maybe the quantity changes and the ratio of the carbs and the fat and the protein changes. I always say that the Indian diet is the most wholesome, provided you get the right ingredients. Your mustard oil is actually mustard oil, and it's not some 100 rupees liter mustard oil, which the seeds probably cost more than needed to make that 1 liter mustard oil. The ghee is the right kind of ghee. The atta is indigenous and not a made up crop, right? And your veggies, if possible, your veggies are organic or natural, or just naturally done and not mass. इन सब चीज़ों के लिए पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने पड़ते. इन कॉन्ट्री बिलीव के इसमें खर्चने पड़े. आपकी हाउस हेल्प है, उसको बोलिए घर से लेके आए अपने गांव से, उसको पैसे दीजिए, है ना. अपने घर से घी बना के लेके आए गांव से, उससे तो बहुत बेटर होगा ना. एक बोरी भर के वहां से आटा लेके आए, चावल लेके आए, धान लेके आए वहां से, है ना. तो जो स्टेपल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, राइट. एंड देयर इज नथिंग मोर होलसम यार. हल्दी, कलर वाली हल्दी नहीं, गांव से हल्दी मंगवाओ, है ना. ऑर्गेनिक ब्रांड की नहीं खरीदनी है, गांव से मंगवाओ. अपने आसपास देखो, तो उसके लिए थोड़ा सर्च करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, राइट, है ना. तो if you could attain that, you could attain great heights in your health, contrary to the belief that you need to have olive oil. Olive oil is promoted because EU nation has invested millions of euros on promoting olive oil. Our ghee is golden, but the right kind of ghee. Actually 500 rupees a kg is not ghee. You need, if you talk about our desi cows, you probably need 25 liters to 30 liters of milk to make 1 kg of butter. Agreed. है ना. तो आई थिंक उसमें 1500 to 1500 के आसपास तो सिर्फ मिल्क की कॉस्ट है. हाँ, किसी ने ना ऑनलाइन ऐसे ही स्टैट्स डाले थे. पतंजलि का जो घी आता है, राइट, इतनी तो काउज ही नहीं है जितना वो घी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में. तो ऑब्वियसली मिलावट है उसके अंदर. सो द राइट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द रेशियो चेंजेस. आई ऑलवेज सजेस्ट डाइट्स विद अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट यू कैन हैव एंड सम थिंग्स दैट यू शुड नॉट हैव. And then play with it. What are those you should not have? The wrong kind of ingredients. Sugar. Avoid sugar totally. Avoid sugar totally. Why? Because sugar is slow death, brother. Huh. Even if it's brown sugar, even if it's good. The body will only, understand a specific kind of sugar only to a certain extent. After that, sugar becomes only sugar and it'll raise your insulin.
Even if it's good. even if it's good. ये नहीं And पता not था. to say you eliminate everything, but understand that if you're an athlete, then sugar is probably not a right thing in the name of carbs, even after post workout. And that goes for a common person also. I think that could eliminate a lot of health problems. Sugar. Sugar and having a little wholesome sattvic kind of diet. I think most of the population needs just that, because in the past week you've had chola bhaturas and you've had coke and all of this, and then suddenly for 1 week you ease out your system. No non-vegetarian, right kind of ghee, mustard oil, right dhan, ragi, jawar, sabji. इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तांबे के बर्तन में पानी, बस ओके. खाओ. अब मेरे पास कुछ खुश और रहो. भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हाँ, इसको पूछो ना. सुन के, बिकॉज अच्छा ठीक है, लेट्स किल दैट क्वेश्चन. वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉर एन एथलीट, व्हिच वन? I think early in your career, non-vegetarian. Okay. Late in your career, vegetarian. Why so? I think vegetarian, essentially when you are building muscle and you're going through the nuisances of the sport and 3 practices a day, day and night you're running. I think some red meat and some pork, that lard on the pork, that fat, really helps with your neurotransmitters. It really helps with sustained energy. It very much helps with your dopamine. Spoke about neurotransmitters, and you need that. And you cannot get just enough protein from those plants. है ना? You just can't. When is that time जब transition करना चाहिए vegetarian में? Late in your career, you said. when your body tells you you're getting old, when you need that extra ice bath after the game, or you need that extra 10 minutes of stretching before your game, or that extra mobility before your game. That's when you need to cut down on your weight that you were essentially playing on. Maybe change your game a little bit. Maybe stop that bumping, grinding game. If that's what you position, if that's the position you were playing in, ऐसा है. तो शुरू में नॉन वेजिटेरियन, और ताकि थोड़ा सा चलता रहे बिल्डिंग ब्लॉक्स, and बाद में vegetarian, ease up the system, drop your weight, change your game a little bit, see how you want to move, what works best for your body. That will give you a sustained career. और वर्कआउट्स भी ऐसे ही चेंज होंगे. नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है वैसे वो ह्यूमन बॉडी के लिए है नहीं. राइट. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए नहीं बना है. राइट. ओके. बहुत सारी चीजें हैं. अब पैलियो डाइट में तो कहते हैं कि एंसेस्ट्रल यही खाते थे, रॉ मीट, जंगल में रॉ मीट खाते थे. तो मैं कोई डाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट वर्क करा और मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज क्या डिड्यूस करती है. अभी इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे कि पानी से जीव बनती है और पानी से मरता भी है आदमी, वो भी मिल जाएगा. है ना? मिलेगी सारी चीज गूगल बाबा पे. So you keep using what works best for you. बट ब्लड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट बढ़ा देती है. एंड मैं वेजिटेरियन डाइट में भी उसको अगेन द राइट काइंड ऑफ मीट. ओके. है ना? एंड अगेन मैं वेजिटेरियन डाइट में भी उसको थोड़ा सा पॉइंट करूंगा. व्हेन यू सेड घी, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये भी ब्लड की टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं. हम लोग मिल्क ज़्यादा कट करवाते हैं, घी मक्खन हर आदमी से नहीं कट करवाते. कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए आता है तो उनके लिए पूरे डेयरी प्रोडक्ट्स कट कर देते हैं. अगेन केस बाय केस बेसिस. It's also a lot of trial and error when you work with certain people very deeply. You work as a team and you're finding a solution. Sometimes some things will work and some won't work. None of this is on paper. Yeah. It's very dynamic and very interactive. मेरे दिमाग में ना ऐसे बहुत चाल मच गया अभी क्वेश्चंस का. मतलब अब मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन तो एड्रेस नहीं कर पाऊंगा, बट फॉर अ कॉमन पर्सन हु वांट्स टू नो व्हाट वर्क्स फॉर मी,
एंड वेजिटेरियन डाइट में, एंड हाउ डू यू सजेस्ट वो अपने एज के अकॉर्डिंग अपने कार्ब्स, अपने प्रोटीन्स को कैसे मैनेज करे ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी ले विद नो प्रॉब्लम्स? एंड डोंट चार्ज मी फॉर दिस राइट नाउ. नहीं, कोई चार्ज नहीं है यार. कॉमन लोग इसमें मैं यही बोल सकता हूँ कि अपने फूड को रोटेट करिए, यू नो, एंड कनेक्ट विद योर बॉडी. When you say rotate करिए मतलब your body gets used to something? No, just to understand, sometimes that's how you will find your allergies or the process of elimination. You know, something that's not sitting right in your stomach. Sometimes a lot of lentils, I do some kind of one kind of a food quotient test, which gives you, you know, what works for you and what doesn't work for you, and specific to ingredients. Basically, you can do the same thing by trying to eliminate certain things from your diet and seeing what is sitting right with you and what's not. आज आपने कुछ खाया है, 72 घंटे के बाद आपका पेट में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि 3 दिन पहले जो खाया था it's not sit right in your. It could be something as healthy as a broccoli. You know, तो स्टमक एसिड क्या चीज़ आपकी एक्सेप्ट कर रहा है वो चलेगा, और बस. एंड जैसे आजकल तो हर कोई यूट्यूब पे ज्ञान बाबा बन गया है, ठीक है, आई वुड से सच्ची में मैं भी हूँ यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे ज्ञान बाबा नहीं, बट एक्चुअली यूट्यूब पे आप मतलब आई हैव सीन माय पेरेंट्स वाचिंग यूट्यूब वीडियोस जहाँ पर हर कोई डाइट के बारे में ज्ञान बांट रहा है, बोलते हैं कि यू नो आप ये कर लो, आपके थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, थायराइड के लिए आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये डाइट फॉलो करो. तो उसमें आई हैव सीन you know people recommending to eat raw fruits, raw food instead of cooked food. So I don't know the science behind it. Can you help me out with it? रॉ फूड खाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, रॉ फूड. आई मीन कुक मत करो, रॉ खाओ जितना खा सकते हो. सुबह की डाइट में सुबह उठते ही आप सबसे पहले फ्रूट्स खा लो, 12 बजे से पहले तक आप अपने यू नो फाइबर ले लो, उसके बाद थोड़ा सा आप इनटेक करो जो कर रहे हो. The first thing that happens when you are not cooking your food is you are not cooking out the essentials out of the food. But that brings me to, what are the essentials in today's food? है ना? You are better off washing or boiling that vegetable before eating it raw. But is it right what they're doing or what they're recommending, and people I mean, you can have a following? mix of things. You can have some cooked and some raw. ये मेरे डैड भी करते हैं. अलोम विलोम करना है तो अब बोला है तो अब 2 घंटे अलोम विलोम कर रहे हैं, है ना. अगर किसी ने बता दिया कि मिलेट्स खाने हैं तो अब मिलेट्स की दाल भी बन रही है, मिलेट्स की खिचड़ी भी बन रही है, मिलेट्स की मिठाई भी बन रही है, सारा मिलेट्स खाने. ऐसे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी कोई भी चीज़. प्रपोर्शन में खिलाओ. पोर्शन में खिलाओ. रॉ डाइट ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग सम कुक्ड फूड एज वेल. एंड कई बार लगेगा नहीं सूट कर रहा तो स्विच करो, यू नो. हार्ड एंड फास्ट रूल्स मतलब मैं अपनी को यहाँ पे थॉट रख दूँ विदाउट एनी kind of analysis or you know some kind of study to back it up. It's, you know, I do what's worked best for me, and I impart that knowledge, and I keep updating myself. At Crumaco, everyone can get those kind of knowledge and help that they're looking for. We do courses as well. We work with athletes as well. We work with patients and बैक पेन, नी पेन, जैसे आप लोगों को बोला था पहले. तो कोई भी कर सकता है एंड क्रमाको को रीच आउट कर सकता है. I'll put in the, if you're watching this podcast or listening to this podcast on YouTube, I've put in the, you know, his links in the description below. You can check it out.